श्रीमद्भागवतम् अद पञ्चमस्कन्धः अद त्रयोदशोऽध्यायः 17 श्लोकम्। दैर्वञ्चितो हंसकुलं समाविशन् नरोचयन् शीलमुपैति वानरान् तज्जादिरासेन सुनुवृतेन्द्रियः परस्परोद्वीक्षण विस्मृतावतिः त्रुमेषु रंस्यन् सुदधारवत्सलो यवायदीनो विवसस्व बन्धने क्वचित् प्रमादात् गिरिगन्धरे पतन् वल्लीं गृहीत्वा गजपीद आस्थितः अद कथञ्चित् स विमुक्त आबतः पुनश्च शार्दं प्रविशति अरिन्दम अध्वन्यमुष्मिन्नजया निवेशितो प्रभञ्जनोद्याभिनवेद कश्चन रघुगण त्वमभिः अध्वनोऽस्य संयस्तदण्ड कृतभूतमैत्रग अशञ्जिदात्मा हरिसेवयासितं ज्ञानाशिमादाय दरादिभारं राजोवाच अहो नृजन्मा किल जन्मशोभनं किं जन्ममिस्त्वपरैर् अभ्यमुष्मिन् न यत्ऋषिकेश यशकृतात्मनां महात्मनां वप्रसुरसमागमः न हि अद्भुतं तच्चरणाब्जरेणुभिः हतां हसो भक्तिरदोक्षजेमला मौहूर्ति काद्यस्य समागमाच मे तुस्तर्चुमूलो बहदो विवेकः नमो भगत्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवडुभ्यः ये ब्राह्मणा कामवधूतलिङ्गास् शरन्ति देभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम् श्रीशुकोवाचः इत्येवमुत्तरामाद स वै ब्रह्मर्षिसुत सिन्धुपतय आत्मश तत्त्वं विकनयत परानुभाव परमकारुणिक दयोपदिश्य रघुगणेन सकरुणमभि वन्दितचरण आपूर्णार्णव इव निपृत करणोऽध्यायाशयो धरणिमिमा विचचार सौवीरपतिरपि सुजन समव गत परमात्म सतत्व आत्मनीय विद्याद्यो ध्यारोपितां च देहात्ममतिं विससर्ज एवं हि नृप भगवदाश्रिता सुतानुभावः राजोवाच योह वा इह बहुविता महाभागवत द्वयाभिगत परोक्षेण वचसा जीवलोकभवा स हि आर्यमनीषया कल्पितविषयो नाञ्जसा व्युत्पन्नलोकसमाधिगम अत तथैवैतत् दुरवगमं समवेदानुकल्पेन निर्दश्यधामिति। इति श्री भागवत महापुराणे पंचमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।